Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video. You're watching YouTube channel Raman Coaching and I'm your IELTS expert Mr. Ramandeep Singh. In today's video, I'm going to help you to prepare the sample answer of one of the latest cue card, and the cue card is describe a piece of local news that people are interested in. That means कोई ऐसी local news हो आपके एरिया की जिसमें लोग काफ़ी interested हैं. आप नए स्टूडेंट हो सकते हैं या आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो थोड़ा टाइम पहले से आल्स प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर द वन देन यू डेफिनेटली नो दैट आल्स कीप ऑन आस्किंग द सेम थिंग्स बट इन अ डिफरेंट वे. आप में से कितने स्टूडेंट्स ने जज किया आइए देखते हैं. यहाँ पर एक क्यू कार्ड है जो पहले भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहे थे एंड द क्यू कार्ड वॉज talk about an improvement you would like to see in your hometown or in your area. मतलब आपको कुछ यहाँ पर improvement चाहिए. तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आपको लगेगा कि ये आइडिया इस क्यू कार्ड के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही रियलिस्टिक बात है कि लोकल एरिया की कोई न्यूज़ है जिसमें लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो लोकल एरिया की कोई इम्प्रूवमेंट है जो आप देखना चाहते हैं. तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें कैसे रिलेट करेंगी आइए मैं आपको बताता हूँ. आइए देखते हैं. सबसे पहले इसके क्यूज़ क्या हो सकते हैं. What the news is, how you got to know about it, why people are so interested in this news and how do you think it would affect the people. तो अब बात करें एक डेवलपमेंट की जिसका हम इस क्यू कार्ड का आइडिया मान सकते हैं. दैट वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्क. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत टाइम से एक वेकेंट प्लॉट पड़ा हुआ था जो ज़्यादातर लोग गार्बेज डंप करने के लिए यूज़ कर रहे थे, और ये चीज़ अनडाउटेडली हमारी सिटी की या हमारे एरिया की ब्यूटी को रुइन कर रहा था. इट वॉज़ मोर लाइक अ स्कार. एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑब्वियसली जब इतना लोग आकर यहाँ पर अपना गार्बेज या वेस्ट डंप करेंगे तो जिसकी वजह से फाउल स्मेल आती थी, और लोगों ने बहुत टाइम से इसको क्लीन करने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था. यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स घूमते रहते हैं जो सेफ़ नहीं है, बच्चों के लिए डिजीज़ फैलाते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ कि काउंसिल ने ये डिसीजन लिया और ये आपको न्यूज़ लोकल न्यूज़पेपर में या रेडियो अनाउंसमेंट में या टेलीविज़न पर कुछ भी आप कह सकते हैं वहाँ पर देखने को मिली, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया कि इस वेकेंट प्लॉट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा एक ब्यूटीफुल पार्क में. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक पार्क बन जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर लश ग्रीन ग्रास होगा, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ होंगे, फ्लावर्स होंगे. तो यहाँ का जो व्यू है वो एंटायरली चेंज हो जाएगा. इट वुड इन्हांस द ब्यूटी ऑफ द एरिया. और इतना ही नहीं, ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा. देन यू कैन से फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल. यहाँ पर कुछ स्विंग्स वगैरह होंगे, कुछ राइड्स वगैरह होगी, तो बच्चे यहाँ पर सेफली खेल पाएंगे, अपना फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे. हमारे सिटी में बहुत सारे ओल्ड पीपल रहते हैं जिनके लिए कुछ करने के लिए नहीं है, वो घर पे रहते हैं, बहुत ही इनएक्टिव एंड बोर्ड फील करते हैं. तो यहाँ पर आकर वो अपने एजमेट से मिल पाएंगे, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक योगा कर पाएंगे, और नहीं तो कुछ इकट्ठे बैठकर यहाँ पर कार्ड्स खेल सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ जब मिली तो सभी लोग इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड थे या बहुत खुश हुए इसे सुन के. इट वुड बी हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल. आई एम प्रीटी श्योर आपको ये आइडिया बहुत ही रियलिस्टिक लगा होगा, और आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंगली और कुछ भी बना सकते हैं. दैट्स योर चॉइस कि क्यों लोग उस न्यूज़ में इंटरेस्टेड थे, लेकिन दिस इज़ समथिंग ऑल एज ग्रुप वुड बी इंटरेस्टेड. दैट्स वाई मैंने ये आपके साथ आइडिया शेयर किया है. तो आइए देखते हैं कि इसका सैम्पल आंसर कैसा होगा. बट बिफोर आई मूव आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डाउनलोड माई IELTS कोचिंग एप्लीकेशन वेयर यू कैन फाइंड द पेड प्रोग्राम्स, एंड जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम मोर टाइम जब तक इंस्टीट्यूट्स नहीं खुल जाते. और एक बार जैसे ही खुल जाते हैं तो आप योर ब्राइट फ्यूचर IELTS इंस्टीट्यूट मोगा जो मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ फिजिकल इंस्टीट्यूट में. मेरे फिजिकल इंस्टीट्यूट में आकर आप मेरे साथ IELTS प्रेपरेशन कर सकते हैं. वेल, लेट्स स्टार्ट द सैम्पल आंसर ऑफ टुडेज क्यू कार्ड. Well, to remain up to date with the latest happenings around the world, I always follow news, but I keep deep interest to read the local news as they have a direct impact on our lives. Let me talk about one such local news that I came across in the local newspaper last week, which was about the construction of a park for the city dwellers. Actually, in my locality, there is no park. However, there is a vacant plot that people use to dump the garbage. At the same time, you can see stray animals here all the time. This plot is more like a scar on the face of my locality.
The place not only stinks but also spreads diseases. But the local administration has now decided to transform into a public park. It would definitely help to make my locality clean and green. In addition, it would allow the community members to socialize. As we say in the evening as well as in the morning time, people like to visit parks where they sit together and talk. It would be a wonderful place for old people to sit together to play cards, gossip, and enjoy other activities. Similarly, it would provide a safe playing area for children. In my area, mostly children play on streets, which is quite dangerous as there is always a risk of accidents. But a park would offer them a safer place where they can play. In fact, as per the news, the new park would have swings and rides to allure them. Last but not least, people these days suffer from many health concerns, but in park they can go for a walk and practice yoga, which would really benefit the people and would ensure well-being of the community members. As per the news story, the construction work would start by next month. And I must say that this one local news has brought a huge smile on the faces of local residents. Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS Speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world? This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS Speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download ClassPlus and enter the ORG code IELTS. To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP, and once you register, you will see the home screen something like this. Click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects in INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now.